From where I got it from, to wow, I know it's real. Okay. Mm, mm. नहीं बेटा नहीं do it. Okay, so 3, 2, 1. Uh, I'll discuss this is October, November 2024. Okay, so this is your paper two we will be discussing today. Okay, so obviously I will discuss the entire. We can continue in the next class as well, but uh, we'll try to do like 60% today, and I'll give you one question for home. Try it, collaborate. We have to do it. Okay, refer to the insert. Obviously, first of all, you're supposed to know what the insert is. Yes, you do know what an insert is. Make sure you have full understanding of the insert. You're so right. Actually, yeah, what? It's pink day. Yes, it's खुद ही connect हुआ था। हाँ, laptop में होता है ना वो, पागल हो गया। हो गया। That's the best I can do. हिलाना तो खराब हो जाएगा. Okay. So 3, 2, 1. You do know the left. How does it work? So the left basically takes a string and how many characters you want to extract. For example, if you have this, it will extract this. Right, same way. Mid would extract the mid value, starting from a position and how many characters you want to extract. So you should be well versed in the insert. Open up multiple inserts, okay, and then go through them. What does the length does? To upper will convert anything to uppercase, because all these will be used while writing the pseudocode. So these will be very helpful in case. Number to string, string to number. I, you know it, right? If I'm skipping it, I hope you have an idea. Good, good. Is it a number to check? If it's number, if the boolean says true, this means it's a number. Otherwise, false, it will not number. ASCII will return the ASCII value. For example, ASCII B will return 66, the ASCII code, just like at the rate का होता है 64, A का होता है 65. Yes. So character would actually return is the opposite of that. 66 पे character कौन सा होगा? The opposite of the ASCII. Integer will return integer value. Rand is a random. Uh, so rand or rand between. You can also use is rand between as well. So it's the same thing. Yeah, rand. It is used to have random values um, starting from 0 till 87. ओके. रैंड रैंड बिटवीन में फ़र्क यह है कि रैंड बेसिकली डज इज कि वो जीरो से लेके वट एवर यू डिफाइन विल गिव यू द वैल्यू. इफ यू यूज रैंड between, it will give you the option to define, give me the random values between 10 and 25 comma. So you can define the starting and the ending point, and it will give you the random values between these two. That's the basic difference between these two. DMY, month, day, year, hour, minute, second. Okay. Um, Day index, basically, if your day index will return is the three out of it. Okay, because you do know that Sunday is one, Monday is two, Tuesday is three. So it starts from one and goes till seven. So it tells you the index value of the day from one till seven. Yes or no? Okay. Then we have the set date. So set date, you can set a date. For example, 26 this. So आप उसको set कर सकते हो. Today basically returns the date of today's date. End of file, आपकी file handling में, if you want to see that you want to go till the end of the file, read till the end of the file, you will use end of file method. Okay. फिर बाद में आपके operators आ गए. Okay. Comparison operators आ गए. Nothing much to discuss about. It's quite basic. But I would always recommend के spend 1, 2, 3 minutes, go through the entire insert. Somehow it gives you an idea that while writing. So obviously, there's a reason they always give you this. So let's come and discuss this. Well,
I have to discuss all of them. I know that some are very basic questions, but we have to. So, identify the stage of program development life cycle that this correction is made. I'm pretty sure you know there corrective maintenance, perfective maintenance, yes or no? Okay. Uh, और कौन सी होती है हमारी corrective, perfective, adaptive. Very good. Right. I hope all of you know what these are. Right. Typical question वही आता है. ये आपको आते हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. I want to come to more of pseudocode questions. So, क्या question है ये? Right. So, a program function an IDE is used to help locate errors. The ID features of watch windows, single stepping, and breakpoint will be used. Explain these features, including. So, breakpoint is basically is where we can pause and we can actually find out the error. Single stepping actually means is we can use single stepping to go to one statement and so one statement at a time we can observe and keep on executing it. Okay, and display valuable use of watch. So और क्या था उनका break point? You watch window. Hmm? Watch window bit of वही होता है कि you're working at the same time and you can see what is happening at the output at the same time. Exactly, exactly. To solve a problem, या वही फिर question typical आ गए auto indentation, auto correction. I don't have to elaborate. Or do I have to? मुझे रोक देना if you want me to. Because ये बहुत typical आप कर चुके हैं बार बार. Yes or no? I'm not discussing. Fine, fine, ठीक है. Why waste time on things जो आपको पहले ही पता है? ऐसे ही question में पहले भी किया था. Let's have a look at this. So please stick with me because I want you to be involved while doing this. A program is being developed. ये मैंने ख्याल से आपको दिया था. Let's do it. Discuss. The program is being developed to process bank card information. When a card number is displayed, all the characters except the last four are replaced with the star. Card numbers are stored as strings. The strings are between 0 to 20 in length. The function conceal will take strings representing card number and return modified string. So, for example, if you have this, मॉडिफाइड में और ऐसे ही होता है हमेशा जो लास्ट आपको बताया जाते हैं कि दिस इज वेरीफाइड इज दिस योर सो वी रिमेंबर द लास्ट फोर और बाकी दे आर हेडेड ओके सो बाय लुकिंग एट दिस आई थिंक सो नाउ आपको आइडिया होगा क्वेश्चन किस तरह का है क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि कंसील हमने प्रोसीजर बनाना है दैट टेक्स न्यूमेरिक स्ट्रिंग एज पैरामीटर okay represent the card returns a string in which the static character replaces all except the last four of the credit card. Write the pseudocode. Okay, so before I start writing it down, in order to solve such a kind of questions, create a mental model. You will create is a model in your brain and you will think of okay how can I do it. Refer to the insert and see is there anything in the insert to help you out. After doing that, what I can see is there is a string manipulation function, mentioned over there, which was the right function, which will help me to actually extract left or right. Okay, I could probably use that. So yes, वो आ रहा है. उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा इसके साथ साथ? Yes, I have to reach till that point. हाँ, very good. Exactly. Subtract. ठीक है? तो obviously when we have to write the conceal function we have to write procedure उसके बाद we have to declare ठीक है और so first of all procedure function में सकते हैं मगर CI would prefer you writing not function मैंने function लिख दिया मगर procedure is the right word to be used okay so but you write function there's nothing wrong with that okay welcome so a concealed card number would be a string fine it's a string. Declare the length and conceal string. Now, length is important to have. Well, uh, so, okay, hold on. G, it's a string, it's a string. Important ही basis Aliza ने कहा कि we can actually use is our right. Length इसलिए जरूरी है. If I know the total number of characters that I have in my card number, I can subtract it from what she's saying. So total length minus that. So पहले total length पता होगी तो करूँगा ना. Okay, because the question over here is saying what? It's saying, you see I have different original string,
The number of characters are differing because the string are between 10 to 20 characters in length. It's not static. It's not only 20. So it can vary. That's why length has to be used. वरना हम 20 डायरेक्टली लिख सकते थे 20 माइनस दैट मगर इसलिए हमें लेंथ यूज करना पड़ेगा दैट्स द रीजन व्हाई हम पहले लेंथ यूज करेंगे तो आपने सबसे पहले देखना है कौन कौन से वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं लेंथ चाहिए स्ट्रिंग चाहिए ठीक है सो आई एम प्रीटी श्योर दिस द फर्स्ट थिंग यू विल थिंक ऑफ यस कौन से नहीं वो तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ बस कि हमारा ये जो लेंथ वुड बी दैट सो लेंथ will do this yes or no एलियन ठीक है सो कंसील्ड स्ट्रिंग जो होगी हमारी नाउ this is important where we have to focus concealed string initially would be empty because what I will do is कि मैं पहले मैं उसको empty रखूंगा concealed string को ठीक है I'll run a loop over here what is this loop doing starting from 1 to the length minus 4 so whatever I have 10 है or 20 है if I go so 1 से लेके I will go till not the end but 4 lesser than the total length लूप चलेगा वहां से वहां तक का you get my point so this is what it should come in your mind I have to run the loop to replace those number of characters with the star कहाँ तक रिप्लेस करने हैं दिस इज हाउ वी रिप्लेस गेट माय पॉइंट ओके सो कंसील स्ट्रिंग सो कंसील स्ट्रिंग प्लस दिस का मतलब ये है कि हम ये स्टार उनमें ऐड करते जाएंगे सो कंसील स्ट्रिंग में जब रन करेंगे उसमें ये आ जाएगा फिर उसमें ये आ जाएगा उसमें आता जाएगा कब तक चलेगा यहाँ तक चलेगा लूप चलेगा इससे क्या हो जाएगा आई विल हैव स्टार्स आ जाएंगे सारे मगर लास्ट फोर कैरेक्टर्स विल रिमेन डू यू फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग श्योर श्योर नहीं नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा क्यों लाइक कम ऑन इसमें हम्म हाँ ठीक है मगर वो लेंथी नहीं हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा बहुत ना या देखो इसमें इशू क्या है लेट मी एलैबोरेट अगेन बेटा ये क्या थोड़ा थोड़ा क्या मतलब व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा थोड़ा व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर व्हाई एम आई यूज ओके यहाँ तक आ गया है अब समझो बात को मैं मेरे पास है 18 डिजिट्स मैंने क्या करना है मैंने जो 18 में से आपके 14 है ना 14 को मैंने रिप्लेस करना है स्टार से हाउ वुड आई डू इट आई वुड से इज कि जो मेरी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से -4 करो मतलब 18 -4 इज 14 सो 1 टू 14 तक लूप चलाओ सो 1 बाय 1 1 टू 14 तक 1 2 3 4 14 तक कीप ऑन रिप्लेसिंग इट विद स्टार दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर and the loop keeps on going on and keeps on concatenate string which has nothing में स्टार आता जाएगा स्टार आता जाएगा स्टार आता जाएगा स्टार आता जाएगा कहां तक 14 तक 14 स्टार्स आ जाएंगे मेरे पास यस और नो उसके बाद क्या होगा ये हमने एंड कर दिया फिर हमने किया कि कंसील क्या करेंगे कंसील स्ट्रिंग प्लस मिड ये क्या है मिड नंबर लेंथ -3 4 क्या हाँ यस wait hold on wait आमना think over it देखो बात सुनो प्लीज अब बोलने मत so mid card number length my so mid does what it tells you the card number so I have a card number that has 18 okay total length कितनी है 18 -3 yes or no मैं उससे बैक आया ठीक है वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग लेंथ से वहां से स्टार्ट करो हाउ मेनी यू वांट टू एक्सट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पोजीशन 4 सो मिड का मतलब वो कार्ड नंबर के कहां से स्टार्ट करना है
टोटल लेंथ -3 और नेक्स्ट आखिरी 4 को एक्सट्रैक्ट कर ले. That's how we can do it. हाँ, होगा इंक्लूसिव, इट्स इंक्लूसिव. जी, नहीं यार. जी, नहीं था. जी, इंक्लूसिव होगा. किस केस में? हाँ, या क्योंकि दैट इज इंडेक्स्ड वैल्यू ना. होगा, बिल्कुल होगा. करेगा, इंक्लूड होगा. मैंने स्टार्टेड द क्लास विद यू. आई एम्फसाइज्ड ऑन कि आप इंसर्ट को अच्छी तरह पढ़ो. अगर मैंने इंसर्ट पढ़ा होगा, मुझे पता होगा मिड यूज हो रहा है इस एग्जाम में, तो समहाउ मुझे क्लू भी मिल जाएगा कि जिस तरह रैंड बिटवीन भी है, इसमें रैंड आया हुआ है. क्यों उन्होंने रैंड दिया हुआ है? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने रैंड यूज किया हुआ है. हाँ, पेपर के हिसाब से. Absolutely. So it's a clue that tells you that these things will be used. All of them are not used, but many of them are used. This is why we should always study the insert. हमेशा समझते हैं कि नहीं insert हमें पता ही है. Exactly. You look at different papers. उनके insert different हैं. Some are very limited. Some are इसका insert बहुत lengthy आया था जो मैंने आपको दिया था. इसमें pseudocode बहुत ज़्यादा थे पेपर में. The one I gave you in the final. Yes. Maybe I was very unfair. Yes, I know. I'm realizing it now. मैंने सारे pseudocode ही दे दिए थे. Yes. So, okay, so you got the last part, then we return and we end the function. Yes or no? So this was your 6 marks question. Okay. On an average, everyone should have scored at least 4 in this, not less than that, because this is not much. Although 6 out of 6 is what you should be able to score in this easily. Get the point? Get more practice. Right now. Let's practice it more. Can I continue? Okay. Then we have is yeah, I have to do all the number. मैंने कहा ये part भी मैंने आपको दिया था. And I think so many of you were able to do it right. So this was your actually 2D array, and you do know 2D array को हम define करते हैं 0 to this and this. So you have is row and column, okay? 0 to 100 and 1 to 2. So that's what 2D array is. You have 100 rows and 2 columns in this. Am I right? Right, and that's the how you declare it. So this is a very typical question that comes every year. How do you declare an array? I hope all of you know this. Okay, कोई एक दो बच्चों की जिन्होंने गलत किया होगा. अच्छा, यहाँ एक चीज आई हुई है कि the new procedure conceal will write the modified string to the corresponding element in column 2. The array card number is passed as a parameter to the new procedure conceal. Identify how this parameter should be specified in the new procedure header. So it will be by reference. Now, I'm pretty sure most of you do not know okay, what is meant by reference and by value or directly. Let's talk about that. मैंने इसकी example भी यहाँ create की हुई है, which I can use that to explain you. I just did it. Hopefully this is the one. Yeah. You look over here. What do I have? This example that I have over here is by reference. So I made a function def modify list. I'm adding a list के 0 पे 99. My list में 1 2 3 लिखते हैं. And what I do is if I actually Python का latest version आया ना PyCharm का, मुझे last time is वो install ना करना. That is the मैंने भी यूज नहीं किया. हाँ, गलती से आई हैव टू वेरी केयरफुल कि सीआई में वो ना गलती से हो जाए. ओके, सो वो आई हैव टू मेक श्योर. आई हैव टू मेक श्योर. वो तो फिर बहुत अच्छा. बिल्कुल मैं इसे कह रहा हूँ. एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं. आप आई विल टेक अ डे, जो नया वाला है ना उसको देख लेते हैं, होगा नहीं इंस्टॉल. लेट्स से उनसे गलती से इंस्टॉल हो जाता है, उनसे नहीं होता, नया इंस्टॉल टाइम ज़ाया होता है. वी हैव टू मेक आवरसेल्फ सेफ. The plus scans will they're not very professional. I'm recording this as well. I hope they hear that. They're not. वो आप स्टूडेंट का कैंडिडेट कहेंगे जी आप करो करो करो. अभी एग्जाम हुआ है, वन ऑफ द स्टूडेंट आई लिखा था, उसके ड्रीम व्यूवर अवेलेबल नहीं था, चल नहीं रहा था, इंस्टॉल नहीं रहा था. उन्होंने कहा जी आप वेब एक्सप्रेशन करें.
उसने कहा मुझे आता ही नहीं वेब एप्लीकेशन, बेटे बेटे कर लो कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ। हाँ। आपके प्रैक्टिकल में मैं हूँगा, आई प्रॉमिस। हाँ नहीं, मगर अब मैं हूँ, अब मैं फुल टाइम आई हूँगा। आपका पैरागॉन में होगा ना, जी आपका पैरागॉन, नॉट आपका पैरागॉन में। ओके, no, no. I'll be there. Don't worry. It's my lab over there. So no worries. Okay? Even in November के एग्जाम में भी I was supervising CS. मतलब मैं साथ साथ क्लास ले रहा था, साथ साथ वो हो रहा था. Okay? So okay, now let's see what's happening. What's happening over here is I modify list, by reference basically हो क्या रहा है कि आप reference दे रहे हो, okay, और उसको आप update कर रहे हो. You get the point? Okay, you will get it more and with more clarity when I discuss with you by value. So by value किसका काम करता है? Let me first. So if I obviously run this, uh, I हो गया था. Let me just come here, and by having a look at this, आपको idea हो जाएगा what I'm trying to say. This is by value. So what I do is, you see over here is, we directly put the value over here. You see this? मैं value directly यहाँ put कर रहा हूँ, या with the reference आ रहा है. मैंने list को define किया, इसमें फिर वो reference use किया, या it's by value. So there are two ways we can actually call. Technically, you have done this before, but you're not aware of the name. This is known as value, and this is known as reference. You get my point? Okay, so let me somehow do one thing. ये जो जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं साथ साथ सऊदी नेट नहीं चल रहा, मेरे फोन का ही चल रहा. Okay, I'll share all this whatever I'm discussing with you now. I will share in the group as well. Okay, so that you can refer to this and you can practice. And if you have further questions, come back to me और पूछो मुझे दोबारा. ठीक है? So we have now what? The program uses tags to hold 60. I have to discuss this. Uses stack to hold 60 numeric values. The stack is implemented using two integer variables and one the array. The array is declared in pseudocode as shown. ठीक हो गया. The stack operates as follow. Global variable as a stack pointer acts as a stack pointer that points to the next available stack location. The value of the stack pointer represents an index in array index. That's the way it works. Global variable on stack represents the number of values currently on the stack. So global value on stack represents the number of values currently on stack. The stack grows upward from the array element index. ठीक हो गया? Give the initial give the initial values that should be assigned to the two variables. Yes. Stack grows upwards. जी. नहीं, the last 12 मतलब yes, recent मतलब means के वही आई होगी. Stack is first in, last out. Hmm. First in, last out. Q is first in, first out. याद रखना, ठीक है? So वो कहता है give the initial value that should be assigned to the two variables. So obviously stack pointer one explain the stack pointer starts at one because so obviously starts at one. Obviously common sense की बात है. Yes or no? It starts at one. Okay. और वो कहता है initial values आपकी on stack की क्या होगी? Global value on stack represents the number of values currently in the stack. Yes or no? So on stack 0, the variable starts at 0 to indicate that there are no values currently in the stack. Yes or no? This was basic question. तो still 1 mark है. खुद ही बताया वो, उसने खुद ही आंसर दे रहा है. Okay. Explain why is it not necessary to initialize the array elements before the stack is used. Okay. ये जरा हो सकता है थोड़ा I don't know tricky हो ना. Why is it not necessary to initialize the array elements before the stack is used? मैंने इसकी explanation आपको दी हुई है. We initialize array elements even when the stack doesn't strictly require it. Okay, basically ये हम theoretical pseudocode में करते हैं initialize. Technically वैसे में करने की जरूरत होती नहीं है.
Unused values can be popped out or taken off the stack since they are not initialized. This ensures that unused elements cannot be assessed. Elements in the stack are not assessed until a value has first pushed onto it. Any new value post will override the previous value at the same location. You get the point or not? देखो देखो बात सुनो मैंने क्या है we initialize array elements, okay, even when the stack doesn't strictly require it. Okay, we do it. It doesn't strictly require us to initialize it, primarily for safety debugging and professional best practice. क्योंकि technically तो whenever we have to access the elements or retrieve the elements, we will use push and pop to do that. आप उसको initialize करो ना करो, it doesn't make a difference. Get the point? It still works. So just to professionally theoretically उसको explain करने के लिए हम उसको initialize करते हैं दिखाने के लिए. Technically नहीं initialize का मतलब होता है for example ये declare this, right? ठीक है ना? This was a bit tricky question for uh, अच्छा the function ये भी interesting है. The function to add a value to this stack is expressed in pseudocode shown. The function will return a value to indicate whether the operation was successful or not. Complete. So function push uh, boolean होगा real, declare return value boolean. हाँ ठीक है. So अगर मैंने solve किया I should have asked you to do it. So um, अच्छा आपने इसको ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा 0 to 160 पढ़ लिया आपने ना. You read 60 numeric values 1D, read all this right, then come to this. तो वो क्या आप पढ़ेगा if then return false. What would happen when it will return false? So very good, exactly. ठीक है. So false, agree with me? ठीक है. Already paid. And if so this value basically जो होगी वो किधर जाएगी? This value would be this stack के stack pointer पे जाएगी. ये मैं obviously आपकी जो भी value add करते हैं जो भी stack होगी stack pointer पे ही साइन हो रही होती है. और फिर obviously वो increment हो रहा होता है. मतलब इसको आप देखोगे ना अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं stack pointer में हम increment कर रहे हैं every time, right? ये हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है इन पाइथन, आपको याद होगा when we were discussing stacks. हम्म. ठीक है. इसमें there are we have a pointer and we have the stack data. The pointer has to be incremented as well. The data has to be incremented as well. हम stack pointer plus one करी जा रहे हैं. Point to this, point to this, point to this. We are incrementing the pointers. Where do they point? Yes or no? Or on stack plus one. ठीक है. So then we have is ये कौन सा क्वेश्चन है जी? किया था. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. तो इसका मतलब आपको याद है अभी तक? Okay, let me read it. A global variable tick is always incremented every millisecond, okay, 1000 times per second, regardless of the other programs running. ठीक हो गया? The value of tick can be read by any program, but the value should not be changed. Assume that the value of tick does not overflow. An example of this pseudocode algorithm would output goodbye 40 seconds after outputting hello. अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट चीज को अपना अंडरलाइन करते रहो. लाइक 40 सेकेंड्स हो गया, आउटपुट गुड बाय करेगा. ठीक है. मेरे पास एक वैल्यू टेक की है, मिली सेकेंड्स में मैंने करना है. ठीक है. सो आई विल जस्ट हाईलाइट दोज थिंग्स जो मेरे ज़हन में आ रही हैं. दे हैव टोल्ड ओवर हियर इज लाइक डिक्लेयर स्टार्ट आउटपुट हेलो स्टार्ट टेक रिपीट करे until tick is equal to start plus for 5000 मिली सेकेंड्स में गुड बाय. ठीक है.
A program is needed to help users to time an event such as boiling an egg. The time taken for the event is known as elapsed time. The program contains a procedure called timer, which will take two integers values representing an elapsed time in minute and second. Um, Uses the value variable tick to calculate the elapsed time. Output the message 30 seconds before elapsed time is up. Output a final message when the total time has elapsed. For example, अगर 5 minutes 45 seconds रह गए हैं, तो we will have two parameters. Okay, so वो जो बात कर रहे हैं आपके साथ two integer values, ये उनकी बात कर रहे हैं. One is your minute, one is your second, right? When 5 minutes 50 seconds have passed, so it will tell you. So when 5:15 is valid, it will let you know. The program will output 30 minutes to go. So उसने कहा है output a warning message 30 seconds before, okay, not 30-second exact, before 30 seconds से पहले, okay, that time is up और final message आ जाए, ठीक है. तो और when it's full तो ये message आ जाए. इसका हमने लिखना है सुडो कोड, ठीक है, प्रोसीजर का. तो सबसे हैव अ लुक एट इट. एक थोड़ा सा दिमाग में सोचो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल what are the different variables I would declare. So obviously well, I'll have a procedure timer. और procedure timer के अंदर I will define is two integers. One will be minute, one will be second as integer. Fine, हो गया. उसके बाद I have to declare what? I have to declare over here is the what you call that. क्या क्या declare करना पड़ेगा इसमें? Yes. टोटल टिक टाइम, ठीक है. और जी और सो हमें चाहिए होगा टिक टाइम, टोटल टिक टाइम हो गया. आपका आपका चाहिए नहीं होगा. देखो क्यों चाहिए होगा. Why would I need it? आमना, why do I need it? आपने कहा मेरे पास होगा इसमें लिफ्ट टाइम होगा, इज टोटल टिक टाइम और लिफ्ट टाइम इसलिए चाहिए होगा जो जो टोटल टाइम है उसमें से कितना पास हो गया है, टू फाइंड आउट हाउ मच इज लेफ्ट. सो आई नीड टू हैव वेरिएबल which is elapsed time as well. मैं इसलिए का थोड़ी सी खुद सोचो, how would you make a program? You have to have variables that keep on subtracting. Obviously loop तो यूज होगा ही होगा इसमें. इसमें कंडीशन हम लगाएंगे, yes or no. अब उसको कंस्ट्रक्ट करने को सोचो क्या करेंगे हम. थोड़ा सोचो फिर मैं दिखा देते हैं. मेंटल मॉडल, जस्ट थिंक ओवर इट. डिक्लेयर क्लियर आप लोगों ने कर लिया, ठीक हो गया. पहली बात तो है कि हमने ये भी करना है कि उसको बताना है कि 30 सेकंड से पहले हमें मैसेज दे दे, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है. 30 सेकंड से पहले उसने बिफोर का है, बिफोर, यस, ओके. सो टेक टू integer values representing elapsed time in minutes and seconds. अच्छा, एटलीस्ट गौर से इसको देखो. वो कह रहा है हम यूजर से ले रहे हैं टेक टू इंटीजर इन मिनट एंड सेकेंड्स. सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है? सो डू वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट? Because over here when they have talked about this actually is for 40 seconds, 40 seconds. So don't you think so हमारे सूडो को पहले कन्वर्जन ना करें हम? हमें कन्वर्जन भी तो करनी पड़ेगी. नहीं बेटा, वो कह रहे द टेक टू इंटीजर वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग elapsed टाइम इन मिनट एंड सेकेंड्स.
वो कह रहा है कि बात सुनो, वो कह रहे हैं, लेट्स रीड अगेन, ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल टिक इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड एवरी मिलीसेकंड 100 टाइम्स पर सेकंड रिगार्डलेस ऑफ द अदर प्रोग्राम रनिंग। ठीक है, तो हमने एक्चुअली इस पे, और इसने यहाँ बताया, एन एग्जांपल द फॉलोइंग सुडोकू एल्गोरिथम वुड आउटपुट गुड बाय 40 सेकंड्स आफ्टर। तो उन एग्जांपल में बताया हुआ है कि 40 सेकंड्स को हम यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मगर दिस इज समथिंग द स्टूडेंट्स इग्नोर्ड। आप इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लेना। ओके, सो फाइन, बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से, लेट्स सी, सो लेट्स सी व्हाट वाज इन योर माइंड, दिस वाज इन योर माइंड, total duration, static, ellipse time, yes or no? I don't think so anyone will ignore this. जाहिर है, you have to start, फिर कितना गुजरा टाइम, टोटल कितना होगा कैलकुलेशन के लिए, हमें ये चाहिए तीन। टोटल ड्यूरेशन अभी अलीजा ने बताया, यूं ही करेंगे, एग्री विद मी। स्टार्ट किया हमने, फिर हम रिपीट करेंगे, रिपीट अंटिल, सो रिपीट लेफ्ट टाइम इज इक्वल टू टेक माइनस स्टार्ट इफ टोटल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन, क्योंकि उसने कहा है कि उसे 30 नहीं कहा, उसने कहा बिफोर का है, तो जो ग्रेटर देन, ओके, एंड elapsed टाइम इज ग्रेटर देन द टोटल ड्यूरेशन माइनस दिस, गेट माय पॉइंट, दिस elapsed टाइम इज ग्रेटर देन द दिस। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी, तब कहेगा 30 seconds to go, yes or no? हाँ ना, get my point? Okay, uh, and if until elapsed time is greater than total duration time, time's up. Okay, elapsed time is greater than, जो obviously, हाँ, मगर नहीं, नहीं बेटा, उसने कहा है, उसने कहा है इधर, बेटा मार्क्सिंग देख लो, उसमें क्या है मुझे नहीं पता, मगर उसमें यहाँ कहा हुआ है, उसने मैसेज बिफोर 30 seconds before the elapsed time is up। नहीं, वो तो 30 seconds to go का है ना, वो तो 30 seconds to go का है। हाँ बेटा, इसकी मार्किंग के ओपन की है, आप कोई ओपन कर सकता है? कैन समवन ओपन इट? मार्क्सिंग इक्वल टू है, अच्छा ठीक है, मगर बिफोर लिखा हुआ है। हाँ, ओके फाइन। हम्म, मेक सेंस, हाँ, हाँ, यू राइट, यू राइट। हम्म, ठीक है, इक्वल टू, हाँ, नहीं, मेक सेंस, व्हाट शी इज सेइंग इज, इट मेक सेंस, वो तो फिर मल्टीपल टाइम्स आएगा। ठीक है, और उन्होंने बेटा किसमें स्ट्रक्चर यही है, डिफरेंट है मार्क्सिंग। Yeah, but mine, I is 6 out of 6. Every point is there. It's working. Get, हाँ, ठीक है, फाइन, ठीक है, वो भी ठीक है, सही है, ऑब्वियसली वो ठीक है। Okay, then we have is a program contains global 1D array data uh, with 100 elements of integer. The program contains a function process expressed in pseudocode as follow. ठीक है, आप अब देख रहे हो ना? You don't want me to read it out? Are you following me?
count, index, case of return. You have to look into it closely. वो कह रहे हैं कि मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा. Mine, I'll not show you my answer first. वो कह रहा है कि runtime errors can be generated in different ways. Runtime errors. Okay. You know the difference between a runtime error and syntax error. Okay. Runtime is when you execute it and there is some flaw in the data that you probably entered. Syntax error is a problem that is wrong, code that doesn't go with the syntax. Okay. For example, a runtime error will be generated if the function is called with an invalid parameter. उन्होंने बता भी दिया आपको. The pseudocode contains three statements that could generate a runtime error. Write three statements and explain how each could generate a runtime error. So three statements बताओ जिसके runtime error आ सकता है. मतलब any case, any statement जिसमें कुछ हम करेंगे तो error आ सकता है. For example, um, yeah. So, for example, if I enter any number, will that result in any error in a particular line here? Hmm. So, I mean, fine. That's the point I'm discussing. If you look over here, इसमें अगर मैं 100 divide by 0 करूँ, will that not result in an error? Because I did not define over here कि 0 नहीं हो सकता. या तो मुझे define में करता. कोई और बताओ. जी, mod 2. So index mod, मैथ्स पढ़ा हुआ है ना mod की प्रॉपर्टीज पता है ना. हाँ. So देखो. हाँ, infinity. So पहला तो मैंने बता दिया आपको, डिवीजन बाय जीरो. दूसरा, नहीं बेटा, हमने हमने जो बताना है ना, वो कह रहे हैं कि सूट could contain three statements that could generate a runtime error. हाँ, यस, सही कह रहे, ठीक कह रही हो. दूसरा ये देख लो, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्स डेट नंबर अरे इंडेक्स आउट बाउंड. सो फॉर एग्जांपल इफ नंबर इज आपका, आई एम एंटरिंग एनी नंबर विच इज हायर. फॉर एग्जांपल यहाँ हम कह रहे हैं 1D array with 100 elements. ठीक है. तो अगर if I enter over there is value which is above that, तो वो भी होगा. प्लस आमना ने जो बात की है ये वाली मॉडुलस जीरो की, सो डिवीजन बाय जीरो, यस और नो, ये भी एरर जनरेट करेगा. और आमना ने जो बात की है वो भी एक एरर है. यस, आई एग्री. सिंटैक्स एरर है. सो दीस आर द एरर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. हाँ, runtime errors will be. हाँ, you're right. Sorry, Amna. Yes, good point. It is a syntax error. That's the reason why they have stated this कि बच्चा गलती करे. हम्म. मार्किंग में कौन कौन से बेटा पॉइंट्स? हाँ, वही सेम. ठीक है. कौन? सॉरी, टू अपर. हाँ. हम्म. 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 ठीक है. फाइन, मेक सेंस. हमारे से रिटर्न वेल किया हुआ है. देखा.
बोथ हैं, बोथ हैं, क्योंकि वो सिंटेक्स भी गलत है। ठीक है, आप सही कह रहे हो, मगर नहीं वो क्या कोड गलत है ना, आर वैल्यू तो नहीं है ना। दे मेंशन दिस, दे मेंशन दिस। ठीक है, ठीक है, बट हमारे 3 पॉइंट्स हो गए थे, यस और नो। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन टोटल? ओके, नहीं केस मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने केस ऑफ नहीं मेंशन किया। हाँ नहीं, उन्होंने मेंशन किया। ठीक है, मगर है ना ये, दिस इज राइट, केस ऑफ है, गेट द पॉइंट, यू गेट दिस पॉइंट, ये वैलिड है। ओके, वन टाइप ऑफ रन टाइम, इसके लिए बेटा ईआर जरूर, इसी पेपर की आपने काम करना है, आज घर जाके ईआर पढ़नी है, दैट्स योर होमवर्क, ऑलरेडी रीड इट, गेट बैक टू मी इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी एंड लेट्स डू इट दिस वे। ओके, फिर हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हम सही कर रहे हैं, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी शुड नॉट डू, व्हाट द परफेक्ट स्टूडेंट्स डिड। Okay, common mistakes क्या थी, let's do that. So yeah, one type of runtime error can cause a program to stop responding. Identify a particular type of programming construct that can generate this type of error and explain why this. So yeah, pre post condition loop आपको पता ही है, loop को exactly infinite हो जाएगा, yeah exactly, I think so this would have come to your mind, construct, construct concept, post loop is a construct, yes or no? इसके अलावा भी कोई हो सकता है वैसे बात कर, एक तो बता दिया आपने, इज देयर एनी अदर कंस्ट्रक्ट दैट कैन रिस्पॉन्ड टू फ्रीजिंग अपार्ट फ्रॉम लूप्स? hmm I'm saying is the question basically says is one type of runtime error can cause the program to stop uh, freezing. Okay, so let's say if I write over there is that a is less than 12, और मैं कर देता हूँ a is equals to a minus 1, सो मैं तो कंडीशन ही दे रहा हूँ कि लेस देन 12 तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, और मैं नेगेटिव भी कर रहा हूँ, तो वो तो चलता रहेगा नेगेटिव बिलियंस तक, तो वो तो फ्रीज हो जाएगा। हाँ, नहीं वैसे कंस्ट्रक्ट की बात की, कंस्ट्रक्ट, जी, मोस्टली कंस्ट्रक्ट आपके लूप्स ही होते हैं जिनके पास इशू आता है, और लूप्स। हम्म जो आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट है उससे फ्रीज नहीं होता, अगर है तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, गेट द पॉइंट। ठीक है, केस, केस में भी नहीं होता, केस में भी अगर होता है तो वो करता है बट ब्रेक कर जाता है, केस से कंस्ट्रक्ट में भी नहीं होता। ठीक है, और यस, हम्म, हाँ, हाँ, किसकी? हाँ, हम्म, it will, it will, but what construct are we using there? कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द कंस्ट्रक्ट दैट उसमें से ये यही इसका कैसे होता है, अदरवाइज तो कंस्ट्रक्ट नहीं, यू राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल होगा। The function process contains a selection construct using a case structure. Write a pseudocode using a single selection construct with the same functionality without using the case. So obviously वो uh, या तो आप केस यूज कर सकते हो, वो कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग केस स्ट्रक्चर, वो कह या तो केस होता है तो इफ होता है, दो ऑप्शंस होती है, तो वो कह रहे हैं इफ मॉडुलस 2 इज इक्वल टू देन रिटर्न टू अपर काउंट, अदरवाइज दिस। वो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ के आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन क्या है, यस और नो? डिड यू रीड? मैंने नहीं पढ़ा था ना।
I did not read it out entirely. आपको पता है what is it doing? So we're talking about this case. Yes or no? If you want to replace this with an if statement, how would you replace this with an if statement? This is how would you replace it with an if statement. वो ये कह रहे हैं. Okay? Vice versa आता रहता है case और if का आपको पता होना चाहिए. Get the point? दोनों selection हाँ या मतलब रिटर्न वैल्यू को मैं वो डिस्प्ले करा रहा हूँ. ओके किधर नहीं नहीं इक्वल ना सॉरी हाँ हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं क्वेश्चन 6 आई वांट यू टू डू फॉर होमवर्क एक क्वेश्चन देन विल कंटिन्यू हम अभी हम P4 करते हैं हम 6 से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को ठीक है मगर 6 आपने होमवर्क लिए करना है ट्राई इट योरसेल्फ डोंट लुक एट द मार्किंग स्कीम खुद ही ट्राई करके लिख के लाओ एंड देन विल डिस्कस ओके आपका क्या सोल्यूशन है मेरा क्या है विल डिस्कस ठीक है कैन वी डू दैट वे ठीक है आप ले लो ब्रेक हम फिर एक P4 डिस्कस करते हैं ठीक है आई नो बेटा करना है तो फिर एक काम करते हैं ट्यूसडे को तो मैंने P3 कराना है आई कांट पॉज इट फिर इसको आप करो विल डिस्कस नेक्स्ट इसी को ठीक है कंटिन्यू करेंगे ठीक है वो आप